Yeah, good morning, team. India surpassed Japan to become third largest auto market globally, selling 4.25 million new vehicle in 2022 versus Japan, which has sold 4.2 million vehicle. iPhone exports from India doubled to surpass $2.5 billion in April-December, which is almost double. So very positive for Indian job market. Star Health Insurance gross direct premium as of 31st December stood at 8,752 crores, which is higher by 13% year-on-year basis. But in this, retail gross premium is 8,045 crores, which is higher by 19%. Gujarat Heavy Chemical receives requisite regulatory consent amendment for increase in soda ash production capacity from 11 lakh tons per annum to 12 lakh tons per annum. Bond issues from bank to touch almost 1,30,000 crores to 1,40,000 crores. This is what CARE report is said. In FY23, April to December alone, 91,000 crores have been raised, which is highest ever. Rate Gain has completed its acquisition of asset of Adara Inc. USA as on 9th January 2023. Good Clam Group strengthens its partnership with Delivery to implement end-to-end supply chain solution and increase customer satisfaction. Tata Motor has reported their global numbers, Q3 FY23 global numbers, wholesale numbers, which is 3,22,556, which is higher by 13% compared to Q last year. In that, CV is almost 97,000 units and PV is 2,24,600 units. CV has degrown by 5%, PV has grown by 23%. And when you take JLR numbers, the order book is almost 2,15,000 crore. JLR in the statement has said the chip supply has started to increase. Now this is where they were able to grow after a very long time. So this is about the global numbers. Yesterday we saw life insurance stock starting up. SBI Life almost at an all-time high. We think SBI Life will start to outperform. Yesterday, even Sonacom gave a presentation where they have acquired a company. Even ICICI Pru Life has uploaded a presentation which shows this quarter growth has been good. So they will report, ICICI Pru Life will report result on 17th. So I think these stocks have not performed in the last 2 years. So there are chances that these stocks will perform. But there is one thing which is happening in market. High PE stocks have started to correct. You take Bajaj Finance, it has corrected from the highest level more than 25%. And we have Titan, Trend, many stocks where they are trading at 90 or 100 or 120 PE, they have been correcting. Even Jubilant Food, which has been one of our top pick, has corrected more than 20% from the recent high where we started to recommend aggressively. So, but all these high PE stock, it includes Page Industries, whatever you name, Asian Paints, all these high PE stocks are correcting. And we need to understand in the last 7 years, Indian market has been closing positive on positive basis. So this is a record of its sort in last 26 or even 30 years, I can say, where I have been in market. So this is something unique. So we need to understand every stock is not going to perform. And when you have a global recession, high PE stocks are likely to correct. So have that in mind. So advise client accordingly. If need be, ask them, connect client to us, we will convince them or we will talk to them. With that, over to you, Brijesh. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल का एक बार हिंदी में कर लेते हैं.
इंडिया ने ऑटो जो मार्केट है ग्लोबली उसमें जापान को सरपास कर लिया है। और नेक्स्ट अपडेट है आईफोन के ऊपर। आईफोन का जो एक्सपोर्ट है वो अप्रैल टू दिसंबर इसमें मंथ में डबल आया हुआ है, तो ये पॉजिटिव रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट है जो स्टार हेल्थ कंपनी है उनके नंबर्स आए थे, उसमें जो उनका जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है एज ऑन दिसंबर 31 वो 8,752 करोड़ है, जो वो अप है 13% और ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करें तो। और उनका जो हेल्थ रिटेल कैटेगरी है ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम वो अभी है 8,045.5 करोड़, जो 90% ईयर ऑन ईयर अप है। देन गुजरात हेवी केमिकल्स जो कंपनी है उन्होंने सोडा प्रोडक्शन कैपेसिटी 11 लाख से 12 लाख पर एनम टन इंक्रीज की है। देन नेक्स्ट अपडेट है एज पर जो केयर का जो रिपोर्ट आया था उसमें अप्रैल टू दिसंबर मंथ में अराउंड कुछ 19,000 करोड़ फंड रेज किया है, जो हाईएस्ट एवर है। देन टाटा मोटर्स के कल अपडेट आया था, जो ग्लोबली नंबर्स आए थे उसमें जो उनका ग्लोबल होलसेल है वो कुछ अराउंड 3,22,556 Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में है। और उनका उसमें जो जैगवार लैंड रोवर के भी नंबर्स इंक्लूड है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो 13% से हायर है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 से। और उनका जो कमर्शियल व्हीकल और टाटा डिवागो रेंज है वो 97,956 के अराउंड नंबर है, जो लोअर है 5% से कंपेयर करें तो। और उनका जो पैसेंजर व्हीकल है वो 2,24,600 नंबर्स है, जो हायर है 23% से हम लोग लास्ट ईयर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करें तो। देन जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। कल SBI लाइफ ऑल टाइम हाई के नजदीक है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल के भी प्रेजेंटेशन आया था, उनका जो क्वार्टरली जो नंबर्स है वो 17th को है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है जो हम लोग को अच्छा लग रहा है कि जो लास्ट 2 साल में परफॉर्म नहीं किया था तो अभी परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा सोनाकॉम के ऊपर भी अपडेट आया था। अभी जो मार्केट में हम देख सकते हैं, एक नोटिस करने वाली चीज है, जो हाई पी वाले जो स्टॉक्स है वो अभी करेक्ट हो रहे हैं। उसमें बजाज फिनेंस है, टाइटन है, ट्रेंड है, जो अराउंड जो हाई पी 90-100 पी के अराउंड जो स्टॉक चल रहे थे वो अभी करेक्ट होना स्टार्ट किया है। उसमें जुबिलियन फूड है जो रिसेंट हाई से 20% करेक्ट हुआ है। पेज इंडस्ट्री है, एशियन पेंट है, ये सारे हाई पी वाले स्टॉक है जो अभी करेक्ट हो रहे हैं। तो आप उस हिसाब से समझ के क्लाइंट को जो एडवाइस करे, और उनको कुछ भी डाउट है तो आप हम लोग को लाइन से कनेक्ट करवा सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट 7 ईयर में हम लोग देखेंगे तो क्लोज ऑन क्लोज वैसे देखे तो पॉजिटिव मार्केट क्लोज हो रहा है। तो ये हम लोग को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट है तो आप क्लाइंट को हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। देन हम लोग अभी नंबर्स आए थे कल TCS के, तो TCS ने हेल्दी सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए। माइक्रो जो इम्पैक्ट था वो वैरी करता है रीजन टू रीजन, तो US और UK बेटर है यूरोप से। तो TCS ने लोअर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 एक्सपेक्टेड दिया है। और हमारा जो अभी स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 3,615 है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसमें जो BFS है एक्सपोजर है उसमें हम लोग को कोफोज परसिस्टेंट LTM एंट्री पसंद है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है सोनाकॉम स्टार के ऊपर। सोनाकॉम स्टार ने अक्वायर किया 54% स्टेक सेरेबिया बेस्ड जो कंपनी है नोवालिक, उसको 41 मिलियन यूरोस में अराउंड 356 करोड़ में। जो ये नोवालिक कंपनी है वो लीडिंग प्रोवाइडर है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में। और ये एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है वो सेंसर और फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। और उसका जो पोटेंशियल मार्केट साइज है वो अराउंड $43 बिलियन है, हो जाएगा 2030 तक। तो ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कि ये मतलब कंप्लीट होगा 8 ऑफ द Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में, और ये पॉजिटिव होगा सोनाकॉम स्टार के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट थे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई लॉन्च की न्यू थार, जो इंक्लूड करेंगे रियर व्हील ड्राइव RWD वेरिएंट्स 2 इंजन ऑप्शंस में पेट्रोल एंड डीजल। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 10 to 14 लाख है। और बुकिंग है इसकी ओपन होगी और डिलीवर भी होगी जनवरी 14, 2023 से।
देन नेक्स्ट स्टेप अपडेट है पीवीआर के ऊपर। पीवीआर ने अनाउंस किया है कि वो ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लेक्सेस जयपुर, बैंगलोर और गुड़गांव में, और 19 न्यू स्क्रीन। अभी टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 2848, और अभी इसके साथ पीवीआर ने क्रॉस किया उनका 900 स्क्रीन का लैंडमार्क, और अभी उनका काउंट है 903। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने ओपन किए 63 स्क्रीन, और उनका प्लान है कि वो फर्दर 13 एड स्क्रीन करेंगे करंट क्वार्टर में। और हम लोग को लग रहा है कि पीवीआर एक मतलब वेल ऑन ट्रैक पे है, और उसका उनका जो टारगेट है ओपनिंग का 100 स्क्रीन एंड ऑफ दिस फिस्कल वो अचीव करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 23 में उनका प्लान है कि वो टोटल स्क्रीन काउंट जो है 1000 की, वो एडिशनल 100 स्क्रीन फाइनेंशियल ईयर 24 में ओपन करेंगे, और उसका जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो 300 करोड़ का है, और वो एक्सपांड करेंगे न्यू सिटीज में। तो ये अच्छा ये सब अच्छा जा रहा है पीवीआर के लिए। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस है वो 2100 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। द नेक्स्ट अपडेट है सफारी इंडस्ट्री के ऊपर। सफारी इंडस्ट्री ने इंक्रीज किया उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 25% से, जो 3 लाख पीसेस पर मंथ है गुजरात फैसिलिटी में, और उनका जो कंसोल लेवल है इंक्लूडिंग उनकी जो सब्सिडरी है एसएमएल, उनका भी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है 52% से 5.25 लाख पीसेस पर मंथ। तो करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस है वो 2133 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है जेएसडब्ल्यू स्टील के जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन था Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में वो हायर आया है 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 17% ईयर ऑन ईयर, जो 6.24 मिलियन टन है। जो इम्प्रूव हुआ है एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के वजह से। कंपनी ने रिस्टार्ट किया उनका ऑपरेशन और मर्ज एंटिटी जीएसडब्ल्यू इस्पात जो 14 नवंबर को रिस्टार्ट हुआ है, जो अंडर मेंटेनेंस था शटडाउन के लिए मंथ ऑफ जुलाई से। करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 611 लॉन्ग टर्म फ्रेम से। देन डीबी रियलिटी जो कंपनी है उनमें एनसीएलडी जो अप्रूव किया है दानी गुड होम्स रिजोल्यूशन प्लान रेडिस स्टेट जीवी पार्टनर एमजीएफ बांड्रा रिटेलर्स बिल्डर्स को, जो सब्सिडरी कंपनी है डीबी रियलिटी की, और वो डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट 10 बीकेसी प्रॉपर्टी मुंबई में। देन एचडीएफसी कंपनी है जो लेंडर है वो सेल करने वाले एंटायर 17.5 स्टेक काइजन मैनेजमेंट एडवाइजर्स, जो उसकी जो वैल्यू है 1.10 करोड़ की है, और वाले सब्सिडरी एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजरी अचीव करेंगी। देन नेक्स्ट अपडेट है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कंपनी ने रिपोर्ट किया 32% ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेट देखे तो Q3 में, और उनका जो टोटल रेवेन्यू है वो स्टैंड है अभी 388 करोड़ में। देन नेक्स्ट अपडेट है पेज इंडस्ट्री है, उनके जो रोहन गिनोमल उन्होंने रिजाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजी से, जो 31 इफेक्टिव होगा 31 मार्च 2023 से। उनका जो रीजन था वो पर्सनल था। देन सूर्या रोशनी के ऊपर अपडेट है मुकुल अग्रवाल है, उन्होंने उनका जो इंक्रीज है स्टेक है वो इंक्रीज किया है कंपनी में 1। काश खिमानी है उन्होंने रिजाइन मतलब रिमेन उनका जो स्टेक है वो रिमेन अनचेंज ही है 1.45% से। देन नेक्स्ट अपडेट इंडियन ओवरसीज बैंक है, उन्होंने उनका जो मार्जिनल कॉस्ट है फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स इंक्रीज किया है 5 बेसिस पॉइंट से। और नेक्स्ट अपडेट है आईएफएस जो पेश करने वाले थे कैनरा बैंक अदर्स 1300 करोड़, तो वो रिसीव हुआ है और क्लोज हुआ है पार्ट ऑफ दैट जो ड्यूज था इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का। लास्ट अपडेट इंडिया का जो थर्मल कोल इंपोर्ट है वो नियरली 15% था 2022 में, और जो ग्रो हुआ था 14.7% से 161.18 मिलियन टन्स का 2022 में। सो ये अपडेट था इंडिया थर्मल कोल इंपोर्ट के ऊपर। Technical and derivatives outlook. So yesterday we saw that there was a recovery in the market and Nifty is almost close at 18,111. There was a recovery of 240 points in yesterday's session. So mainly because of the IT. So IT was a counters which supported the market, followed by metals and oil and gas. So if we look at the chart, overall chart pattern, what we can see is the in the previous week there was a fall in the market, and what we saw yesterday was the pullback of that particular rally. We would maintain that Nifty is overall trading in the range in the higher side 18,200, 18,300 remains the resistance zone. So on the way down, if 17,900 is broken, then again
that lower support range of 17,800, 17,500 will be the lower side range. So net, even though today even the SGX Nifty is down by 50 points, so there is a probability the Nifty can again come back to 18,000 level. So we are maintaining that we are going to see this range bound kind of activity for the entire week. Only if there is any decisive breakout above 18,300 with volumes, then we will change the view accordingly. Then there can be some positive momentum. Till then, it's a range bound kind of market for the Nifty. Coming to Bank Nifty, when the Bank Nifty was up by 400 points, closed at 42,582 levels. Majorly, the Axis Bank and IndusInd were the two counters which showed strength in yesterday's session. Looking at the chart pattern, I believe that even the Bank Nifty is witnessing a pullback. Majorly, the levels to watch in Bank Nifty is 43,000. So only when 43,000 levels are taken on, then the positive momentum will start, and the major trigger will come when 43,700 level will be taken on. So these are the upside resistance which we are watching. So till that time, I think we are in a range bound kind of market. So even the Bank Nifty will continue to see range bound. When I say range bound, we don't expect any sharp correction in the market. The lower side, again, the demands will keep coming in. So stock specific definitely will keep we can keep a buying idea. Coming to the derivatives outlook, so the Nifty PCR has seen an uptick by 0.97%, and the major additions were seen in the 18,000 and 18,100 strike price. On the higher side, 18,200 and 18,300 on the call front option. Nifty OI saw open interest has seen a short covering in yesterday's session to the tune of 0.89%, and which was a reduction of 1.15 million shares. If you look at the Bank Nifty, even the Bank Nifty has seen a short covering to the tune of minus 7.64%, and which was a decline of 0.20 million shares. The major additions been seen in the put options at 42,500 and 42,200 strike price, which can act as a support, and whereas in the call front, 43,000 and 43,500 call options. So this can act as a resistance from the Bank Nifty point of view. Coming to the FI data, so FIs in tomorrow, in yesterday's session, they have bought the index future close to 25,000 contract, and net their long short ratios are now at 49%. And overall, they are only marginally short by 2,500 quantity. So we need to watch this. Maybe next couple of days, if the FI turn positive and even the 18,300 levels are taken up, then there will be a positive momentum in the market. Lastly, the VIX. We are observing that VIX is not the way the market, when the market is correcting, the VIX is not correcting. So this is one of the positive side. We are not seeing any major correction in the market. Lastly, the stocks like Reliance, Ashok Leyland, Astral, and M&M are looking very positive on chart. So this can be kept on a watch list. That's all for my end. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning all. So couple of news from mine. So TCS has reported a healthy set of numbers on revenue side and on the margin side. So on the margin side, there was a miss. We expect that the macros will be felt post 2 quarters. We expect macro impact to be varying across regions, with US and UK better placed than Europe. We believe TCS is well positioned to maneuver through the macro challenges due to scale, taking advantage of vendor consolidation and cost takeout opportunities. Hence, post factoring lower growth in FY24, we now expect revenues to grow at a CAGR of 9% over FY22 to 25. And in addition, we expect margins to improve in coming quarters, and we expect margins at 26% in FY25 from 24% in FY23. The company has declared a dividend of rupees 75 per share, which is indicating 2% dividend yield at current level. We maintain a hold rating on the stock with a revised target price of 3615, which is 9% upside from the current levels. While macros are poor, we believe TCS and Infy will be able to maneuver the same. And apart from that, we prefer stocks which have US and BFSI exposure, like Coforge, Persistent, and LTI Mindtree. The second news is on Sona Comstar.
Sona Comstar said it will acquire 54% stake in Siberia-based company called Novelic for 41 million euros, which is around 356 crores. Novelic is a leading provider of advanced driver assistance system. Advanced driver assistance system sensors are fast-growing category with a potential market size of around 43 billion by 2030. So we believe this bodes well for Sona Comstar. And Mahindra & Mahindra has launched new Thar which includes rear wheel drive. So this is a variant in 2-engine option with petrol and diesel with a price range of 10 to 14, and bookings for the same will open and delivery will begin from January 14, 2023. So this bodes well for Mahindra & Mahindra. In terms of PVR, PVR announced that they are opening around 3 multiplexes in Jaipur and 19 new screens with total in Jaipur, Bangalore and Gurgaon. So PVR has crossed its landmark 900 screens and the count stands at 903. The company has opened 63 screens and it plans to further add around 30 screens in the current quarter. We believe PVR is well on track to achieve 100 screens by the end of this fiscal year, and it's going to add another 100 in FY24, taking the total screens to 1,000. The investment will be 300 crores and will expand to newer cities. We currently have a buy rating on the stock with a target price of 2,100. On Safari Industries, Safari Industry has increased its production capacity by 25% to 3 lakh pieces per month in Gujarat facility. So at console level, including the subsidiary, the total production has increased by 52% to 5.25 lakh per piece. So this bodes well, and we have a buy rating on the stock with a target price of 2,133. So JSW Steel, has seen a production increase of 10% QOQ and 17% YOY. This is mainly due to higher capacity utilization. Also, the company has started the operations at its merged entity, JSW Ispat, which was under maintenance. However, we have a hold rating on the stock with a target price of 611. In terms of Tata Motors Group global wholesale, sales has increased by 13% YOY in December quarter to 3.23 lakhs. Passenger vehicle sales are up 23% during the period at 2.25 lakh units. Meanwhile, Jaguar Land Rover wholesale, including China JV, rose 15% YOY with a positive cash flow of 400 million, which is around 4,003 crores. So this bodes well for Tata Motors. Similarly, LT Foods and other rice exporting companies, authorities are planning to remove the ban imposed in September last year on export of certain rice as domestic prices are stabilizing, according to the Bloomberg report. So this will be a positive for stocks of rice exporting companies. In terms of DB Realty, NCLT has approved Adani Good Homes resolution plan for Radius Estate, which is a subsidiary of DB Realty. So Radius Asset and MIG are developing a project, 10 BKC project in Mumbai. SDFC, the lender will sell its entire 17.5% stake in Kaizen Management Advisors for rupees 1.10 crore. Meanwhile, the HDFC Capital Advisor has achieved the same. In IRB Infrastructure Development, the company has reported 32% YOY increase in consolidated toll revenues at rupees 388 crores. In Page Industry, Rohan Genol has resigned as Executive Director Strategy for personal reason. We believe this is a negative development. In Surya Roshni, Mukul Agrawal, the promoter, has increased its stake to 1.71%, while Vikas Khemani has kept his stake at 1.45%. So that's it from my end. Over to you, Vikas. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. Further news updates are Indian Overseas Bank has increased its marginal cost of fund-based lending rate of MCLR by 5 BPS across 10 years.
From Tuesday, the following hike rate on loans will be in the range of 7.7 to 8.45%. Star Health Insurance, major direct premium, gross direct premium as on December 31 stood at rupees 8,752 crores, up 13% from the year ago period, and retail category gross direct premium stood at 8,045.5 crore, up 19% on year on year. Ireland FS pays Canara Bank other rupees 1,300 crore, led by Canara Bank, has received close to 1,300 crore as part of the dues from infrastructure, leasing and financial services in what is second payout from the defected infrastructure financial. Lastly, Indian thermal coal import up nearly 15% in 2022. India's import of the thermal coal used mainly for power generation grew 14.7% to 161.8 million tons in 2022, showed on the Monday by the higher domestic production shipment by. Thank you so much.